नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि एशियंत। मेरे साथ हैं सुजैन बर्नार्ड जी, जो दोबारा से हमको एक यूरोप के ट्रिप पे लेके जाएंगी। हमको बताएंगी कि भाई स्पेशली यूरोप में जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट देश है विच इज जर्मनी, जिनकी वो हैं, जिनका ओरिजिन जर्मनी से है, तो अपने देश के बारे में, अपने पुराने देश के बारे में क्या सोचती हैं, क्या हो रहा है वहां पर, क्योंकि पूरा जो यूरोप है इस टाइम पे, हम क्राइसिस तो बोल ही रहे हैं कि ये मेरे ख्याल से तो दिस इज नाउ द एज ऑफ द क्राइसिस, कि ऐसी क्राइसिस है कि इससे वापस आना थोड़ा अब डिफिकल्ट लगता है। नमस्कार, थैंक यू सो मच, वेलकम टू द शो। नमस्ते, आप लोग कैसे हैं? सब लोग कैसे हैं? स्वागत है ये पॉडकास्ट में। और हम आदि और मैं, ये हमारी आदत है ना कि बात करने की, और पहले शुरुआत में सिर्फ अंग्रेजी में और हम हल्का सा स्विच करेंगे हिंदी में। तो जो भी मिस्टेक्स होने वाले हैं प्लीज क्षमा कीजिए। नहीं नहीं, नो प्रॉब्लम। आई मेरे हिसाब से एवरीबॉडी रियली अप्रिशिएट्स कि आप एफर्ट करते हो हिंदी में बात करने के लिए टू रीच द लार्जर ऑडियंस। देखिए, जर्मनी में ओलाफ शोल्स की हालत तो काफी खराब है। उसका गवर्नमेंट के ऊपर अभी कॉन्फिडेंस भी नहीं है, लोग भी खुश नहीं है। देयर इज अ लॉट ऑफ इश्यूज, और अभी स्नैप इलेक्शंस बोल रहे हैं कि फरवरी में होगा। Yeah. 23 फरवरी को इनका स्नैप इलेक्शंस है। एंड कई लोग, 26? Okay, ठीक है। हाँ, 23rd 26 वन ऑफ द 2 days, आई एम प्रॉब्ली मिस्टेकन देयर, स्नैप इलेक्शंस होगा। नाउ इलॉन मस्क की तरफ से काफी एक पुश आ रहा है टू रिमूव ओलाफ शोल्स, हटाने के लिए, इसको हटाओ इसको, क्योंकि ये वैसे भी तो ओलाफ शॉल्स है ही नहीं। हाँ, The vote of confidence तो he didn't win the vote of confidence, तो आउट है। और फिर से अपने आप को सिलेक्ट किया चांसलर पोस्ट के लिए, अपने आप को। सो तो ये हम आप अभी तीन इम्पोर्टेंट कैंडिडेट्स हैं। वो एक ओलाफ शोल्स है, मैथ्स है, और फ्रॉम द अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी AfD वी हैव अलिसिया वाइडल। सो ये तीनों के बीच में कुछ हो रहा है, हो रही है। पता नहीं है क्या क्या होने वाला है, क्योंकि अभी नवंबर दिसंबर में जर्मनी में थी, और वहाँ लोगों के बाद बातचीत भी हुई, ऑफ कोर्स, फ्रेंड्स से, एक्वेंटेंस से, सुपरमार्केट में, और हर आदमी का फीलिंग है या अभी इतना उलझन हो रहा है मैं किसी को वोट देने की क्या, नवंबर की लगभग, और दिसंबर तक वो हल्का सा फर्म हो गया कौन किसको वोट करनी है। एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग है। मेरे परिवार में ये सब आउट है, एक यहाँ है, एक वहाँ है, और एक ये है। और जो लोग वो AfD को वोट देने के लिए तैयार है, ये उनका रीजनिंग है, ये मेरे परिवार के लिए है, ये मेरे बच्चे के लिए है। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जो भी हो रहा है वहाँ, वो लोग डरते की वजह से AfD को वोट देने के लिए तैयार है, मेरे हिसाब से। एंड इट्स अ फ्रेश पार्टी, इट्स अ न्यू पार्टी, सो पीपल का उम्मीद हल्का सा ऊपर है। लेकिन मेरी माँ किसी और को वोट देने के लिए तैयार है, और मेरा पापा कुछ अलग कर रहे हैं। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू सी, जो लोग वो हमेशा एक खत में they were voting for the same people. हमारे household सब same लोग हैं यार, they are all Germans, they all have their परिवार है, काम है, शायद हॉलिडे के लिए जाना है, और पॉलिटिक्स इतना नहीं है उनका ध्यान नहीं। जैसे यहाँ के लोग, मैंने कितने बार बोल चुके कि यहाँ के लोगों का पॉलिटिकल सेंस बहुत ऊपर है, बहुत हाई है। आप किसान से बात कर सकते हैं पॉलिटिक्स के बारे में। लेकिन जर्मनी लोग वो इतना रिलैक्स्ड लोग हैं। They were very comfortable in their lives and they didn't understand what's going on around them. वो बिल्कुल समझ में नहीं आया क्या हो रहा है हमारे देश में। It was a fraction of the people who were looking into politics. So I have the feeling they're going in a, I don't know in what direction. I can't even, मुझे भी नहीं पता है संकल्प कहाँ। बट इलॉन मस्क का जो इंटरफेरेंस काफी, मतलब लोग गुस्सा हैं उससे। कई लोग तो काफी गुस्सा हैं, जो लेफ्ट लिबरल कैटेगरी के लोग हैं, जो काफी गुस्सा हैं कि इलॉन मस्क हमारी कंट्री में क्यों इंटरफेयर कर रहा है, और वो एएफडी के पीछे काफी उसने हाथ रखा हुआ है। सो कहाँ पर This is all made up. This is all no, made up. there are I there are don't tweets think. there are tweets where Elon Musk is saying AFD is the next alternative for Germany. इसको लेके आओ ताकि ये पुराना, ये जो गंदा स्ट्रक्चर है, इसको बाहर फेंको। हम तो सब लोग मालूम है कि ये आदमी हर तरह खेल के दुनिया के साथ। He is a player. I don't really
और जर्मनी लोग भी नहीं मालूम है एलन मस्क कौन है. I tell you the truth, I don't think that people know Elon Musk. वहाँ का वो Twitter usage इतना कम है, कोई नहीं use करते हैं वहाँ. Interest नहीं है. Yeah, That is true. I people. don't see many Germans on Twitter. Yeah, and those people who were there, वो भाग गए. Yeah, वो narrative की वजह से नहीं है. वो पहले Elon Musk से पहले भाग गए Twitter से. Because there was like एक journalist से बात हुई, उनका हल्का सा strong opinion था, और वो बंद. clapped on हुआ. So I don't know. I think we have more. यहाँ ज़्यादा लिबर्टी है बात करने की. जो भी मेरा मन है, मैं बिल्कुल ऑनलाइन में खेल सकती, मैं लिख सकती, मेरा एक्सप्रेशन भी है. वो कल क्या कहा था ना हमारा, तो जो भी होता है, there is no clapdown. There is more clapdown in Germany. I think I'm not living there, so मुझे नहीं मालूम है. मैं किसी से बात भी नहीं किया, वो ट्विटर यूज कर रहे हैं और आप ठीक बोल रहे हो, because in European Union last I think November में एक फिगर आया था, 4,000 people were arrested in 1 month in the entire European Union for writing something wrong online, and who perceived that as wrong is something which is open to debate. तो आप अगर कुछ गलत लिखो तो आपको उठा के जेल में फेंकते हैं. That is something which is very well known now तो in उनका अकाउंट सिर्फ बंद किया. Is that मेरा मन है हर बार नया अकाउंट बंद में सिर्फ अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करने की. So he was like very upset at that, and I don't know if he's on some other platform. I mean, we are not in touch, so I can't ask him. The alternative for Germany, इसके ऊपर काफी there is a lot of speculation कि ये pro Nazi parties हैं. Of course ये लोग symbol use करते हैं काफी, but ये लोग जो Nazification के बारे में ये लोग बात करते हैं, is it the 1930s 40s Nazification कि ये Nazification different है, where this whole theory is against the illegal immigrants जो वहां पर आए हुए हैं? ओके, इतने सारे जानकारी मिल चुके कि मेरा दिमाग बिल्कुल आउट है, क्योंकि वो कई लोग वो गवर्नमेंट की साइड से है. दे आर नॉट सेइंग द पीपल दैट आर अक्यूज्ड टू बी नाज़ीज पार्टी का मेंबर नहीं है. I don't know if this is the truth. How will I check it? मैं कोई जर्नलिस्ट नहीं हूँ. मैं सिर्फ अच्छा ये this is my reminder or my disclaimer. मैं सिर्फ एक्ट्रेस हूँ. कोई political expert नहीं है. सिर्फ my personal opinion है. Okay, not that somebody drives into my car. So that is one opinion. वो members नहीं है. और इतने सारे foreigners AfD सम्मिलित हैं. अलिसिया वाइडल की गर्लफ्रेंड partner श्रीलंका से है मेरे हिसाब से. Is it Sri Lanka? I mix up countries. I'm sorry. And so मेरी सहेली ने कह दिया कि वो पूरा मैनिफेस्ट भी पढ़ लिया. So she was saying जो भी ऑनलाइन होता ही है इसमें बहुत सारे झूठे हैं. Of course it's coming from probably from BBC. वो जानकारी वो हमारा मीडिया वो एडवर्टाइजमेंट मीडिया है ना. I don't even know what to say about this because मैं इतना स्टडी भी नहीं किया. I know they have a lot of influence on TikTok. बहुत सारे young लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं. जो लोग वो मैंने अपेक्षा नहीं किया वो वोट देने वाले के वो करने वाले हैं. They will give the vote. And the outcome? अभी ये तो क्या हुआ था ना इमिग्रेशन लॉ का. पहले AfD, März AfD, CDU, AfD के साथ एक non-binding motion on changes to immigration law submit किया और approve किया Bundestag में. And अभी क्या हो गया कि lawyers ने बंद किया अभी. I think कल या नरसों परसों ऐसा कुछ था कि that non-binding motion they wanted to just see कौन आ सकते कौन नहीं आ सकते. The problem is इतने सारे लोग एक देश के अंदर घुस जाते रहते हैं कि हमारे पास कोई जगह नहीं है. ये बड़ा देश है मुझे भी मालूम है. साइज तो ठीक है ना, महाराष्ट्र की साइज कम. Yeah, but I don't know what is going to happen with all these people who are coming. हमारे इतने सारे resources नहीं है, इतने सारे लोग नहीं है. Average age is 47. So even if you want to, even if you think ये अच्छी चीज है या हमारा कर्म के लिए अच्छा है, इतने सारे लोग आते हैं, हम उनकी सेवा कर रहे हैं or whatever, and
वो मेहमान के आने वाले हैं, इसमें वो इसमें वो मेहमान है कि नहीं अच्छा है कि नहीं अच्छी है, सॉरी. So इट्स वेरी, आई मीन बड़ा डेंजरस सा सिनेरियो है अभी, बट इनकी पॉलिसीज जो ये लोग अनाउंस करते हैं एएफडी, मेरे को yeah. वो अच्छी लगती हैं. आई लाइक देम बिकॉज दे आर टॉकिंग अबाउट गेटिंग द जर्मन कल्चर बैक. ये लोग बात करते हैं कि भाई इलीगल को बाहर फेंकना है. और जो सबसे अच्छा चीज मेरे को दिखता है कि एटलीस्ट देयर इज वन पार्टी इन जर्मनी हु इज सेइंग कि भाई मैं अपनी इंडस्ट्री जो है दोबारा रीस्टार्ट करना चाहता हूँ. मैं अपना वो रशिया से जो मैं गैस लेता था उसका पाइपलाइन को रिपेयर करके आई एम गोइंग टू गेट माय गैस बैक. मैं अपने सिटीजन्स को चीप गैस दूंगा, अपनी इंडस्ट्री को चीप गैस दूंगा, ताकि आई वांट टू रीस्टार्ट माय इंडस्ट्री. एंड जर्मनी इज नोन फॉर इट्स मैन्युफैक्चरिंग, स्पेशली द हाई एंड कार मैन्युफैक्चरिंग. तो ये lot of एक, problems to process. yeah, so this is one policy which is very good that I find from the AFD. You know, they're talking about the country, the culture, and the reindustrialization of Germany, which is basically lost. ये तो एक्चुअली नॉर्मल चीज है, नॉर्मल टॉपिक्स है. Hmm. ये दूसरे पार्टीज के पास क्यों नहीं है? वो हाबेक अभी भी चाहिए. मैंने स्क्रीनशॉट सेव किया, मैंने कहाँ रखा मुझे नहीं मालूम है. वो अभी यहाँ की इच्छा है और कि आने के लिए यहाँ का न्यूक्लियर पावर इंक्रीज करने की प्रयास हो रही है. ठीक है, दैट्स इंडिया. एंड जर्मनी is using, what was it, 0.3% of atomic power. इतना कम हो गया. और उसके अलावा we're just taking coal हिंदी में क्या है मुझे नहीं मालूम है. Fossil fuels and coal, they're using these to burn and for electricity. पहले हमने तो पूरा गैस का भी लिया रशिया से. And nuclear power, उनका impact in the world बहुत कम है in comparison. वो 90s का फीलिंग है. 90s में इतना न्यूक्लियर पावर, इतना they put it like a devil. Yeah, मेरे बचपन में मुझे लगता है I will see a nuclear war. मुझे लगता है nuclear war अभी आने वाला है. Nuclear energy बहुत बुरी चीज है. When I was 15, 16, मुझे भी लगता है ये सारी चीज कम करनी है. But you're still here. Nothing happened. I mean, it's what do people say जब आप अपना लोगों से बात करते हो सड़क के ऊपर, when you said you went to Germany in November December, और उस टाइम पे तो क्राइसिस हुआ था जब Olaf Scholz का that entire thing about his, the politics happened about his no confidence in this and that. November December this whole thing took place. What did people say in the street? How were they happy? Were they sad? Were they, A lot of what is the people reaction? a lot of people just struggle to live. This is Europe. This is Western Europe. Yeah. You're talking about Western Europe to me right now. A lot of people struggle to live. Yeah. The interest is just मेरा खाना मैं कहाँ से मिलूं? An average, like the pension has become so less, it's not worth it anymore. Like अभी अगर आप 2,500 euro मिलते हैं from work or as a pension, you are in the poverty line officially. 2,500 euros. Yeah, that's about लगभग 2 लाख के ऊपर, हल्का सा 2 लाख के ऊपर आप poverty line में हैं. It's very confusing. वो pensioners ना, वो मेरी city में वो मेरे parents वहाँ रहते हैं easily. You see a lot of old people, and then there's a special place, a clinic. So you have a lot of handicapped people. So you see these people up down. वो अपना खर्चा कर रहे हैं सुपरमार्केट में, छोटे-छोटे पर्स हल्का सा पैसे निकालते हैं, काउंट करते हैं कितना पैसे है यार. You see all these people, मुझे लगता है I feel very helpless. क्योंकि मैं ये देख रही हूँ, मुझे लगता है ये मेरा देश तो मैं कहाँ अभी क्या होगा? अभी भी खूबसूरत है, अभी भी सब ठीक है, लेकिन ये मैं छोटे-छोटे कट्स में देख रही हूँ कि सड़क में कब से बनाया नहीं, और हल्का सा पैचवर्क किया जैसे यहाँ ना लिपस्टिक पाउडर on the road, and makes me sad. It's like, और जो फाइट हो जाते हैं your oh god, my brain is really not working. I'm sorry.
the people who are fighting with the insurance, वो लोग हमेशा insurance से लड़ते हैं for insurance that is supposed to be yours. जो मेरे parents में देख रही हो आपका वो हर हफ्ते में कुछ ना कुछ होता ही है. मेरी माँ बीमार है तो उनकी दवाई ज़रूरत है और 3 बार ये दवाई पे किया और दो बार पे किया, तीसरी बार अभी नाटक कर रही है वो लोग. ये अप्रूव नहीं है. ये डॉक्टर का रेसिपी है, डॉक्टर का स्टैम्प है, ये डॉक्टर का जो भी है यार. और सबसे बेस्ट एक एक्चुअली हंसने की कहानी है. मेरी माँ और मेरा पापा ये तो मैरिड है, ठीक है. तो my mom was always doing the health insurance पापा के लिए. वो सारे पेपर्स वो काम साथ-साथ कर रहे हैं. She was writing. अभी तो सब ऑनलाइन है. तो she talking to somebody, वो किसी से बात किया इंश्योरेंस के साइड से, and that person was saying आपके पास अनुमति नहीं है. She's like आप किससे बात कर रहे हैं? क्या अनुमति नहीं है कि आप अपना हस्बैंड का इंश्योरेंस फिल आउट करते हैं? मैं 40 साल ये काम कर रही हूँ, 40 साल के ऊपर ये काम कर रही हूँ और आपने अभी मना कर रही है. तो मेरा पापा मामा को अनुमति दिया लिखने सिग्नेचर. ऐसा स्टैम्प भी चाहिए क्या? So that was not like that. It was not like that. जब मैं यहाँ वहाँ रहती थी और let's say 90s 2000 उसी टाइम सब ठीक था. अभी पैसे नहीं है, पैसे कहीं और से लेना है, पेंशन फंड से लेते हैं आजकल. They're taking money from the pension fund to keep the country running, from what I understand when I talk to people. This is all anecdotal. This is not in facts or anything. I'm just telling you some कहानियाँ कि मैं कहीं सुन लिया और किसी ने मुझे बताया. और जो लोग वो अभी मेरे दूसरे सहेली उनकी ऑपरेशन हुई स्पाइन की, यहाँ का स्टिफ किया, यहाँ का ऑपरेशन हुई. एक दिन चेक इन किया, डॉक्टर बिजी थी, उसके बाद उनका डिले हो गया. उनको जबरदस्ती यू हैव टू गो, यू हैव टू चेक आउट एंड चेक इन अगेन. तो एक दिन के लिए हॉस्पिटल 10 बजे वहां चेक इन किया और 12 बजे फिर से चेक आउट किया. तो रात के लिए वहां का बेड नहीं मिला. उनके ऑपरेशन 4 दिन के बाद उनको रिलीज भी किया. स्पाइन का ऑपरेशन 4 दिन के बाद रिलीज किया. सो हेल्थ इंश्योरेंस जो हम लोग यहाँ से बात कर रहे हैं ना कि यहाँ इतना बुरा है, ये नहीं मिलता है, ये नहीं मिलता है. लेकिन वहाँ था तो आई एम सो सॉरी. मेरी इच्छा है कि मेरे पेरेंट्स वहां से पैकअप का या शिफ्ट करनी है, लेकिन चांसेस नहीं है ना. You should get them. I mean, you should get them here. I can't. 3 महीने के लिए थोड़ा वीजा मिलते हैं. कोई चांस नहीं है. हमने कोशिश किया अकेले में. That's fine. 3 महीने के बाद get them on a flight, get them back there, land there, 20 minutes, take the flight back and come back here. You know. You have to be out for 3 months to come back. Yeah, I know. They're doing the same thing now. And Mama abhi 72 hai, Papa ka 8 years old. At least they'll live for 6 months in peace, you know. 3 6 months. Summertime they'll stay there, and winter time they can come down here. You know, I can understand your agony. It's not an easy place. I mean, and you also feel that यार I'm living in a place जहाँ पर सब कुछ है. मैं कुछ भी बोल सकती हूँ. There's no problem. I can abuse anybody. There's no problem. I can go get my treatment. Whoever I ever offended, I'm sorry. I don't. I'm just saying, you know, I know. People accuse India of not having freedoms and this and that, but when people actually live here, यार ये तो पूरा free है. यहाँ पर तो कोई कुछ बोलता ही नहीं है. Nobody says anything to you. You can say what you want to and walk away. Nobody says there is a normal limit. I mean, if you cross that limit, people will hack after you. But generally speaking, nobody cares. Yeah. So it's a very weird time that we're living in. I'm feeling like that everything is switching. यहाँ का बिल्कुल विकास है और वहाँ का down है. Donald Trump. Yeah. What do people think about him? They hate him. Why? Outright hate Donald Trump and Putin. And only the Ukraine is like, wow, they're the poor ones. I'm just generalizing here what they're saying. So, and I see मैं बहुत देख चुके इतने सारे articles और press releases जो भी आते रहते हैं जर्मनी के लिए और जर्मनी के साइड से और BBC ये सब एक कट्टे में जो भी
They're manipulating the people. Papa, Mama, why do you hate Trump? He's a bad guy. He will make war. Why do you hate Putin? Oh, he's a bad guy. He will make war. वहां लोग बिल्कुल भरोसा में कह दिया मुझे कि Putin will attack Germany. They're expecting an attack. Even the army is being strengthened. So they believe it. जो लोग दूसरी भाषा नहीं इस्तेमाल कर सकते, वो दूसरी चीज नहीं पढ़ सकते, वो सिर्फ German media, they're relying on it. It's normal. मामा पापा का शक है कि ठीक नहीं है, especially my dad, he says मैं आजकल मैं पढ़ रही हूँ, वो सही है कि नहीं? I said, Papa, I don't know what to say. You can see every before the चुनौती से पहले, अमेरिका के चुनौती से पहले, every other article Kamala Harris बहुत बढ़िया है और Trump बहुत बुरा है. Kamala Harris बहुत बढ़िया है और ये बुरा है. बिल्कुल only this. There was nothing बिल्कुल वो neutral point of view. मैंने देखा नहीं. ट्रम्प बहुत बुरा है, हाँ? Yeah, Interesting. he's bad. Why is he bad? Oh, we don't know. But you know, there has to be someone in Germany जो, and I'm not talking about politicians तो अलग हैं, but civil society में, जैसे यहाँ पर there are YouTubers, there are opinion makers, there are Twitter celebrities, there are people who people listen to. I mean, I don't have that big a following, but people still listen to what people are saying in this channel. काफी लोग जो बोलते हैं इधर पे, people are, they respect that, they listen to it. Germany doesn't have that kind of an infrastructure where civil society is talking कि भाई बहुत, hello, what are we doing? Stop. I don't even know. मुझे नहीं मालूम है. मैं सिर्फ मालूम है जो भी वो राइट विंग के बारे में बात कर रही है, इतने सारे डेमोन्स्ट्रेशंस हुई इस हफ्ते में. एक कल 160,000 लोग on the roads in Berlin. Nazification के खिलाफ. We are in 1933 again. ये सब हो रहा है बहुत कस के. और इंटरेस्टिंग चीज है, मैंने अर्जुन से भी बात किया. He said वहाँ के Jews, they feel attacks to हुआ, attacks to ऊपर चला गया, but they don't feel like they need to leave. नहीं लगता वो कहीं जाना है और भागना है और जो भी होता है, क्योंकि हम तो डेमोक्रेटिक फॉर्म रहते हैं ना. हमारा तो एक सिस्टम है और एक सिस्टम कैसे तोड़ देंगे एक पार्टी अकेले? मुझे नहीं लगता वो मेजॉरिटी मिलते हैं. और हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग अपोजिशन नहीं है, ये तो बुरी चीज है. हमारे पास यू नीड फंक्शनिंग सोसाइटी, फंक्शनिंग डेमोक्रेसी, वन गुड पार्टी, ये उनका आइडिया है, वहां जाना है, और दूसरे वाला हाँ कैसा रुको क्योंकि वहां ये भी है. ये दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी कि इट्स अ बैलेंस. या or if you are demonizing one political party by saying they're just bad and you want to ban them, aren't you putting democracy in danger? Because you just don't like them? Because you can't put anything against them? Because you're scared of them? If you have it in front of you, you have it under control. Otherwise, you put it into the subsystem. I'm quite shocked when I'm listening to you, you know, I'm like kind of speechless, wondering, here is a country which is smart, you know, it's not stupid. There are certain countries in the world that are stupid. When you look at that, that's a stupid country. Nothing's going to happen to them. Germany has a certain respect. Japan has certain respect. These are civilizational powers. India is getting a ring. There's respect, right? So Germany had respect, and today when Germany, that stupid country, that's the kind of language you're hearing from people online. जब discussion होता है geopolitics का, the reaction, that Germany is inconsequential, and you're like, Germany is inconsequential? Because the past 100 years, the entire world order was based on freaking Germany.
I tell you, this apologetic, I'm sorry, I'm German and I exist in this world is ruining Germany. I'm telling you, the apologetic mindset is ruining the country. Sorry, हमने switch किया अंग्रेजी में. बहुत सारे pleasant देते हैं, but they're not in politics. इतने सारे लोग वो अक्ल है, सब कुछ है, भाषा भी है, eloquent भी है, लेकिन politics के ऊपर आगे नहीं, ये मेरा नहीं है. क्यों? Why are people so scared? I have no idea. It has a very bad reputation. The generation that did what they did is gone. It's dead. It's over. Yeah. I mean, history has bad things in every country. Look at the Brits, by the way. You know, they killed more Indians here, and they're fine with it. They really eulogize, and they tell us, "No, you don't know how to live. You jackasses! I mean, you killed more people in India than Hitler ever dreamed of." Did you see the BBC documentary about Pandit Sharma from Pandit Sharma? Did you see that? Yeah. So it's hard-hitting. It's scary. It's like somebody, you're living your life, जीते और अचानक किसी ने तुम्हारे रख के नीचे ऐसे पुल किया. I mean, I'm not justifying anything. Let me say that very clearly कि कोई justification नहीं है. ये जो गलत होता है वो गलत होता है, चाहे जो मर्जी करे. Whoever does it, it's wrong. Yeah. Germany का जो death toll बोलते हैं with the whatever happened there was 6 million or 10 million or 11 million Jews, right? In 3 years. 1% of the population of Germany. जो भी था, whatever it was terrible, right? In end of the Second World War, in 6 months, Winston Churchill killed 4 million Indians in Bengal. We all know that. It's just the months. PR खेल. मुझे लगता है PR का खेल है. पता नहीं शायद German लोग इतना soft है at some point. वो जो सब लेते हैं. लेते नहीं है ये. This is the deep state. Basically, they have what they've done is, and that is what वो भी डर रहे हैं क्योंकि अगर if Germany stands up again, they're all very scared. And let me say this, मैं तो बड़ा clearly बोलूँगा, the Russians would want Germany to stand up again. See, whenever, and you know, I'm a big student of history. Whenever there has been peace in Europe, it has been on the back of friendship between the German or the Prussian or the German or the whatever empire was there in Germany at that time, and the Russians. They maintained the balance in Europe for 500 years. Yeah. When that balance broke, the First World War, the Second World War, they went back to the balance by creating a dependency on each other for gas. Yeah, okay, we'll keep this balance back again. And they broke that, and look what's happening to Europe again. So ये मेरे को समझ में नहीं आता कि why aren't Germans are able to look at their own history. Forget anybody else's history. Look at your own godforsaken books. Go before the First World War and see what was the reality. But no, I mean, they're clinging to only a Second World War, and after that, and the guilt, and what needs to be done, and there has to be a normal way of looking at your history and still आगे बढ़ो. या जो भी हुआ है बहुत बुरा है. हम इतना सारे पैसे अभी भी देते हैं. हम repatriation जो भी है हम सब करेंगे, लेकिन हमारा तो कोई गर्व तो दे दो कि it should be allowed to say I'm proud to be a German. It should be allowed. Aren't you? I could, but then I get attacked. Hey, you Nazi. You cannot say I'm proud to be German because automatically वो लगता है वो Nazi है, उनका right wing का thinking है. तो अपने culture, अपने परंपरा, अपने धर्म, गर्व allowed नहीं है, तो अंदर का आदमी क्या होने वाला है? मेन स्कूल सिस्टम से बाहर मुझे लगता है ये सब मेरी there's a guilt complex. कुछ गलत की feeling है हमेशा कि मैं क्यों जिंदा हूँ kind of a feeling. कोई healthy relationship अपने परंपरा, अपने इतिहास नहीं है German लोग. And they're swinging. पहले यहाँ है बहुत liberal, woke, sorry.
उसके बाद tongue, I hate every foreigner, सारे foreigners out है. That will happen. That will happen. लेकिन बीच में तो कुछ होना चाहिए. नहीं होगा ना. आप अगर एक एक्सट्रीम पे किसी को लेके जाओगे, the reaction to that is the other extreme only. I know. That is human tendency. You press someone too hard, one fine day he will become the worst killer. That's true. I mean, the rise of the Austrian painter, if I may, was because Germany was pushed down into the corner. ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में जो चीज हुई थी जर्मनी के साथ, अगर वो नहीं होती तो ये नहीं आता. बहुत अच्छा खेल किया ये ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के साथ. ठीक है, this is happening again. मेरे को ये, I mean, I don't know why people don't understand. लेकिन आदि, what do you think? अगर एक पार्टी like AfD is in the Bundestag, it's fine. No. Even if they have some bad history, so what, yeah? They're looking at the future. You can't keep judging people because of their history. I'm sorry. You can't keep judging people because of their history. You can, but you should also look at what they're doing right now. They want to raise Germany back. Give them a chance. What's the problem? We need a bully for Germany. I mean, yeah. I mean, you'll be hated when you say that. That's okay. Everybody, by the way, everybody loves Modi andar se, huh? There are few of us who come out and say it, you know, and some of them, I like him, but don't say it anywhere else. I'm a little shy about it and stuff. Yeah, you're right. So tell me this, European Union, Ursula von der Leyen, this whole gang which is sitting there right now, लोग गाली निकालता है इनको अच्छे से, बट उस दिन यूरोपियन पार्लियामेंट में मैंने एक बड़ा फनी सा चीज देखा अबाउट अभी डेनमार्क और ग्रीनलैंड और ये सब चक्कर चल रहा है ट्रम्प का. सो वन पॉलिटिशियन गेट्स अप एंड सेज फक यू ट्रम्प. ही सेड दैट इन द पार्लियामेंट एंड आई एम लाइक, ये पागल हो गए हैं क्या? Have they gone nuts or what? I mean, so what is the respect? Do people actually respect the European Parliament? I'm talking about the people, not the politicians. The people on the road, do they know that this is this? दूर है वो लोगों के दिमाग से बहुत दूर है. कहीं कोई है और वो हमेशा कुछ बकवास कर रही है. या जैसे छोटी कहानी है, वो मार्केट्स में है ना, क्रिसमस मार्केट्स है, और वो क्रिसमस मार्केट्स के अंदर वो कई औरतों को, आदमी शायद भी, कुछ केक बना रहे हैं, स्वीट्स बना रहे हैं हाथ से, NGO types की तरह. They're getting together at Christmas to make Christmas sweets to sell in the market, to make money, to give to charity. Yeah? European Union ये बंद किया. आप लोगों के पास कोई sanitary system नहीं है, आप लोगों के पास कोई नहीं, blah blah blah. So the interference of the European Union into people's normal life is very, very big. Too big, if you ask me. जो किसान कर सकते हैं पूरे यूरोप में, वो अलग अलग नहीं है, सब एक कट्टे हैं. The laws. जो, लेकिन अगर मैं इटली में हूँ, मैं अलग किसान हूँ कि वो स्वीडन में हूँ. Yeah, it doesn't make sense. अगर तुम्हारा अलग सिस्टम है, एग्रीकल्चर का अलग सिस्टम है, अलग सॉइल है, जो भी है, why are they interfering in it? They're saying वो उनकी साइड से वो हमेशा अच्छी तरह से कुछ करना है, यूनिटी के लिए, ये है वो है. I'm waiting for one thing. One good thing they're doing, they're getting an electricity, they're getting a charger cable and a charger for every phone that has to be the same. No Samsung, this, that, whatever, everything has to be the same. That I like. But otherwise... Big achievement of European Union, huh? They got the phone chargers to be the same. They have to make Europe stronger against every other country, and I feel they're doing the opposite. Yeah. The idea is nice. Like, the execution is not really happening. So lastly, let me put this straight. European Union hates Trump. That I don't know, but I know that the German public does, because so that's why German public hates Trump, because he will make war. Okay. Yeah, he makes war, and Putin makes another war, and basically it's like 5 seconds to war. Okay, so Putin also makes war, Trump also makes war. That means AFD is not winning.
Probably. I don't think they're winning. मुझे नहीं, मेरा अपेक्षा नहीं है कि वो win करते हैं, जीत करते हैं. मेरा अपेक्षा है कि वो शायद हल्का सा वो 20%, शायद 20 के ऊपर कुछ, कि वो what is that, coalition बन सकते हैं. And I don't think that Merz will say no. If the AfD has enough votes, then probably the CDU will make a coalition with them. And to tell you the truth, I don't think it can be worse what we just had now. Yeah, I mean, I keep that attitude. I mean, I'm already in soup. Fair enough. Throw me in shit. Doesn't matter. It's the same thing. Because what will we do now? I'm not even allowed to vote. I can't vote. Why? I've been too long out of the country. Ah. So you're naturalized now Indian, or you're No, I have my passport, लेकिन चुनौती के लिए after 20 years चुनाव के लिए I have to prove that मेरा कोई interest है politics के बारे में, और हमारे videos तो नहीं बेच सकते ना. नहीं, अगर आप if you actually send our video, you will not be allowed to vote at all. That's what you I just or said. your family will not be allowed to vote. No, out. There's the door. नहीं, healthy dialogue क्यों नहीं करते? Why can't we talk? There is taboo. There is a taboo on things. There are certain things, किस topics के बारे में don't talk. और मुझे नहीं मालूम है संकल्प कहाँ है, और कैसे क्या. I think that's the problem in Germany. People have stopped talking. The younger generation has been made to feel bad about what their ancestors did. They've been told not to talk about it. You know, there's this guy on Instagram. Okay, I'll tell you about this. There's this guy on Instagram who basically does these comedy videos, you know, of exercise and this and that. And every time he raises his right hand, he says, no. Every time he does it, no. And it's funny, but it kind of shows you the mentality that, you know, when you want to wave at someone, don't raise your right hand and wave at someone, wave with your left hand. मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ ये videos को. I find them very negative for that generation who watches it. But is that the reality? You can't wave with your right hand? Of course you can wave with your right hand. It's just, it's so funny. We make fun of ourselves. हमारे पास तो कोई humor नहीं है ये, हाँ. They struck a. I get uneasy watching it. I'm not so happy with it, because his audience must be like 20 to 30 or 35. Yeah, and his audience is not German. His audience is not German, obviously. His audience is somewhere else. Yeah, but there are a lot of Germans who watch these videos as well. I can see in the comments. So sad. It is sad. It's worrisome. And then when you see some statistics, like I just looked at the knife attack statistics, because I feel all these knife attacks and these attacks on German soil वो भी influence करते हैं किसी को वोट देने का. So there is like we just had like last year in June, July, and again in July, and then just last year. So there was a sharp increase from 2014 to 2023. And when this starts, it was like, it's a Wikipedia thing. So it's 2005, it says like 2 attacks or 3 attacks. And now in 2023, 8,951. Excuse me? Knife attacks in Germany. 8,000 knife attacks. Yeah. And 2022, 8,160. And this is not it's a big country, but it's not that big. I mean, the population is lesser than the smaller. 8,900 attacks divided by 360 days gives you 24 attacks a day. There's a knife attack every freaking hour in Germany. 8,100. What did I say? 8,900. Just take 9,000. Yeah, so 9,000 divided by 360 days is 24 a day.
Okay, you just hit me. Yeah. Oh, That's an attack exactly. literally every freaking time, all the time. I mean, it's crazy. Oh, And I mean, you see the same statistic coming out from Sweden, which is scary. They had 31 bombings in the past 30 days. and people live their lives and don't see what's going on. Oh, No, and I wonder, this is the whole thing. That's why a lot of people, when they say that India is the one, because India, at least people are aware of what's happening. And I think that's the only reason why India will grow, is because people are aware. People on the street know what's the reality. People are aware. You can talk to any shop wala guy, even a street vegetable seller, and he'll tell you. yeah, yeah. He'll know exactly, sir, ये अमेरिका वाले हमको तंग करते हैं and all that. They'll know basic, okay, this is how the world Canada, works. Canada, Canada में भी हो रहा है, Yeah, क्या they'll बोला know. हुआ है? They'll know that वो कनाडा वाला ना वो प्राइम मिनिस्टर बदमाश है. They'll know that. Yeah. The guy is a rascal and he'll keep troubling India. So that basic knowledge is there. He might not know what's his name, what party, what political affiliation. They know, but he has a basic idea of, listen, my Yeah, country is under attack. ये बेसिक आइडिया वहाँ बहुत मिसिंग है. बहुत सारे एल्डरली लोग हैं जर्मनी में और यंग लोग भी है और बीच में हल्का सा भी है. सो वो यंग लोग कहीं where are they from? कहाँ आ रहे हैं? कौन है? ये है वो है. Amazing. Suzanne ji, thank you so much. It's always a pleasure, and talking to you, but learning about things. Honestly, a very sad situation. I hope things kind of improve, because this is not how a country should be. A country as proud as Germany, it has had a bad history. There's no question, but you got to look forward. You got to don't punish your generations for what somebody else did. Apart from that, the main thing is that it's a shocker to me that people hate Trump, and when there are two different Literally, things. my mom goes green in the face. सालों से ये नया चीज नहीं है. So it's not, I mean, for me, don't like Trump is fine. Yeah. That's okay. But when someone tells me they hate him, that's वो लगता है इतना इन्फ्लुएंस है जर्मनी में कि वो हेट करने की जरूरत है. that's interesting. America is like Germany कहाँ है? क्या है? ये कोई काउंटी है क्या? Thank you. Always a pleasure. Namaskar. Take care.